He is entitled to reserve seats as per the proportionate representation system in terms of Article 51, 6D and E and 106, 2C of the Constitution. On the other hand, Mr. Sikandar Bashir Mohammed, Learned Counsel for the Election Commission of Pakistan, submits that according to Article 51 and 106 of the Constitution, the reserved seats have to be allocated on the proportionate representation system only those political parties who have contested the general election and won at least one seat in the said elections. Since SIC did not contest the elections and did not win even a single seat in the general election, it cannot be considered as a political party in terms of Article 51, 6D and E and 106, 2C of the Constitution for the purpose of allocating the reserved seats. Learned Attorney General for Pakistan supports the contention of the Learned Counsel for the ECP. Both the Learned Counsel for ACP and the Learned AGP frankly concede that this is a case of first impression involving questions of constitutional law that have not been addressed by the court earlier. The above questions of allocation of reserved seats in the National and Provincial Assembly touch upon the foundational constitutional concept of a parliamentary democracy, that the voice of the electorate is truly reflected in the composition of the assemblies. Democratic mandate necessitates that the allocation of reserved seats enhances the representativeness of the electorate in the assembly and upholds the principles of fairness and transparency in the electoral process. It is paramount to prioritize the integrity of the election so that Parliament remains a true reflection of the will of the people. Therefore, leave to appeal is granted to consider, among others, the said questions. These appeals are to be posited for hearing. Yes. My Lord, who are the respondents? Sir. Tell us who the beneficiaries are. Yes. So, my Lord, there are two kinds of respondents. One are the political parties. First, tell us the beneficiary respondents. The beneficiaries. If your Lordship may see respondent number 2, 3. No, 2 is beneficiary to what extent? The additional seats have been allocated to them. 1 seat, 2 seat. How many? Okay. Sir, if your Lordship may then see, I filed a CMA 5208 of 2024. Yes. Page 2 of that CMA. G. Page 2. You have names. Just tell us. No. 3 seats. अगर आप party affiliations देख लें. No, just tell us. MQM will get 2 more seats, 1 more seat. Just tell us numbers. Your Lordship wants numbers. Sir, in total, the disputed seats are 77. National Assembly. No, national and provincial. Can you break them down? Yes, National Assembly is 22. NA, G, and provincial. Break down the provincial. Provincial would be 55 there. Break them down. Yes. So 22 में women and the non-Muslim. Yes. Breakdown कर दें सबका. Have you shown such breakdown somewhere? No, I've not shown, but I can give your Lordship. Yes, please do so. Ji. So. वो देना सर. Book I've attached all the notifications. Just number बता देना. जी वही मैं आपको मैं सिर्फ document. Don't make us work so hard. No. We'll read them. Don't worry. बिल्कुल नहीं सर. Sir. Unless the other side contradicts, you will accept your statement. No, I'm very grateful, sir. Your Lordship has always been very gracious. Sir, as far as आपके colleague कर सकते हैं ये काम अगर उनको पता है. नहीं सर मैं अच्छा. Women is how many? National Assembly. Sir, National Assembly women from Khyber Pakhtunkhwa is 8. 8. From Punjab
it is 11. This is National Assembly, sir. Sindh, And Sindh from National Assembly for women is 1. Balochistan, Balochistan में कोई dispute नहीं because we had no presence in the parliamentary. Islamabad Capital Territory. नहीं, वहाँ तो assembly, वहाँ तो reserve seats का है चलिए, ये नहीं. हो So गए the 20. dispute only relates to 3 provincial assemblies. No, women now come to Yes, non-Muslims. Non-Muslims. Yes. नहीं ये नॉन मुस्लिम 2 है, ये 20 हुई ना, ये तो लेडीज की जो आप, नहीं, ये मैंने आपको रिजर्व सीट्स नेशनल असेंबली वुमेन, तो वो 20 है. जी, अब मैं आपको वो दे रहा हूँ. 20 बनते हैं, हाँ 2 रह जाते हैं नॉन मुस्लिम्स. ये फिगर आपका करेक्ट नहीं है. फैसल मेरे ख्याल में 19 है, इफ अगर आप देख लीजिए. 19 है जी, ये 19 है सर. ये तो 20 हुई ना. नहीं नहीं, ये 19 है जो मैंने आपको एक लिखवाया. आपने ज्यादा बता दी, कौन सा ज्यादा बता दिया आपने? केपी की 8 बोली हैं, पंजाब 11. 19 और 1 सिंध बोली आपने, 20 सिंध हो एक गई. नहीं, एक सिंध है ना. 20 हो गई ना ये. जी सर, ये मैं नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ. ठीक है चले ना? तो जी. चले आगे बढ़ते वो हैं. असल नॉन मुस्लिम में 2 कौन सा? असल में इलेक्शन कमीशन में भी कुछ गलतियां की हैं, कहीं 22 दिखाई हैं. आप फिगर आप जी, मैं इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं. मैं अब आ गया हूँ नॉन मुस्लिम. मुस्लिम्स तो पूरे पाकिस्तान का होता है ना. जी जी जी, तो बोलो. वो तो खैर ठीक है. 2 ये जी, 2 नेशनल असेंबली हो गई. 10 है नॉन मुस्लिम. नॉन मुस्लिम 10 है, नेशनल असेंबली में 10 नहीं, डिस्प्यूटेड सीट्स की बात हो रही है. डिस्प्यूटेड पेज 23 पे है. चलिए 2 हो गए. अब आप लेट्स गो टू द प्रोविंसेस नाउ. जी, एक नोटिफिकेशन में सर ये 3 दिखाए हुए हैं, ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने. सो देयर इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द इलेक्शन कमीशन. 77 है या 78 है? आपके मुताबिक क्या है? सर, हमारे मुताबिक जो है ये 23 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक जगह 22 दिखा, एक जगह 23 दिखा. इसलिए मैंने दोनों नोटिफिकेशंस आपके ठीक सामने. है, ओके. नाउ लेट्स गो टू द अदर वंस. Now let us, this is National Assembly, women and non-Muslims. Now I come to the provincial assemblies. अब आप इसका ब्रेकडाउन भी दीजिए ना. ये जो 8 किसको गई सीटें, जी कौन सी पार्टी को? जी, तो अब ब्रेकडाउन. ठीक है, ओके. ये ग्राफ अपने कुलीग को दे दे, वो जब तक ब्रेक डाउन करता रहे. नहीं नहीं, मेरे पास ब्रेकडाउन है सर. क्योंकि फिर वो आपके मुखालिफ होंगे ना. हाँ? वो आपके मुखालिफ होंगे ना, जिनको सीटें गई हैं यकीन. जी जी जी, वो मैंने लगाया हुआ है ब्रेकडाउन सर. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी, अगर आप ये एक पेज. सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है. आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया.